उसी फ्लाइट। और यहाँ से आपको लिए चलेंगे सीधे इंदौर, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन में शिरकत कर रही हैं। और अब राष्ट्रगान होगा। We extend a very hearty and warm welcome to Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, and His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname. We also extend a very warm welcome to Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shri Bangubhai Patel, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar, Honorable Minister of Civil Aviation, Shri Jyotiraditya Scindia, and Honorable Minister of State for External Affairs, Shri V. Muralidharan. कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से कर रही हूँ, जो प्रवासी भारतीय दिवस के जन्मदाता थे। ये कविता आप सभी को समर्पित है। विदेश में देश की शान बनाई, विदेश में देश की शान बनाई, भारत की पहचान सदा हमारे दिल में बसते, कैसे कहें मेहमान। देवी माता अहिल्याबाई के आशीर्वाद से आज भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं अपनी शुभकामनाओं के साथ पधारी हैं स्वच्छता के सिरमौर इंदौर में। I now request Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar, to kindly address the august gathering and give the welcome remarks. Honorable President of India, His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of Suriname, Honorable Governor Shri Bangubhai Patel ji, Honorable Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Minister of Civil Aviation, Shri Jyotiraditya Scindia ji, Minister of State, Shri Muralidharan ji, my diaspora brothers and sisters, friends. It gives me great pleasure to commence the valedictory session of the 17th Pravasi Bharatiya Divas in the august presence of the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. I am grateful to the Honorable President for gracing the occasion and agreeing to confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards. Her presence this day means so much to all of us. We deeply appreciate the presence of His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, who's been the chief guest of this convention. I thank His Excellency Shri Chandrika Prasad Santokhi ji, President of Suriname, for his distinguished presence at this event. Friends,
Representing the best of Indian talent and creativity in foreign lands, our diaspora has demonstrated exceptional qualities of dedication, commitment, and perseverance in many fields. Their contributions, achievements, and successes have earned them an enviable reputation in their respective societies. They are not only harbingers of change in their own worlds, but regarded as an authentic connection to that in India. Each of them has done us proud, and the awards being presented today are a reflection of that sentiment. From the discussion during this convention, it is clear that the global demand for Indian talent, skills, products, services, and practices will only increase with time. So too will mobility and migration, facilitated by the initiatives that the Modi government is taking with various partners. All this will only make the Pravasi Bharatiya Divas more meaningful and salient in the coming years. This convention takes place as we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav and enter the Amrit Kal. It is time to recognize the sacrifices and achievements of the past, even as we prepare for the ambitions of the future. The digital exhibition at this venue was an endeavor in that regard. The Youth PBD was similarly an effort to capture the optimism of the coming generations. Prime Minister Narendra Modi's address gave us the vision and guidance for the journey that we embark on. And the Council of the Presidents of Guyana and Suriname and the warm sentiments that they expressed convey the good wishes of our family abroad in this regard. 5 union ministers and 3 ministers of state have also spared their valuable time to interact with our overseas brothers and sisters. And Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ji and his team have been truly effective partners in making this convention so successful. The valedictory session today is a culmination of the 3-day Pravasi Bharatiya Divas Convention. The Pravasi Bharatiya Samman Award, to be conferred by the Honorable President of India, is the highest honor given to overseas Indians. Since 2003, a total of 269 such Pravasi Bharatiya Samman Awards have been conferred. Today's award ceremony aims to recognize the achievements of 27 such remarkable persons from our diaspora and acknowledge their successes. I join you all in congratulating them and cherishing this opportunity to reaffirm that for India, the world is indeed one family. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय। माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश की गौरव माटी के ही बेटे हैं और जन सेवा से पूर्ण निष्ठा से जुड़े हुए हैं। We now request the Honorable Minister of Civil Aviation, Shri Jyotiraditya Scindia ji, to kindly address us. हमारे इस मंच पर विराजमान भारत की राष्ट्रपति महामहिम परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज इस मंच पर हमारे साथ विराजमान गायना के राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली साहब,
सूरीनाम के हमारे राष्ट्रपति महोदय आदरणीय चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल साहेब, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, देश के यशस्वी विदेश मंत्री आदरणीय जयशंकर साहेब जी, विदेश राज्य मंत्री आदरणीय मुरलीधरन साहेब, और हमारे सामने बैठे हुए भारत के अंतर्राष्ट्रीय जगत में चमकते हुए हमारे सभी नवरत्न, हमारे प्रवासी भारतीयों को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। आज इस मंच पर हम भारत के राष्ट्रपति महोदया, गायना के राष्ट्रपति महोदया, सूरीनाम के राष्ट्रपति महोदय और आप सबका मध्य प्रदेश के मां अहिल्याबाई की नगरी में जो इतिहास, परंपरा, संस्कृति, अध्यात्म और आधुनिकता सभी का एक संगम है, इस इंदौर में आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और हमें विश्वास है कि पिछले 2 दिनों में इस अतुल्य संगम का एहसास आपको जरूर हुआ होगा। एक लोकतंत्र में असली ताकत लोक माने जनता होती है, और वैसे ही किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी माटी और उसके देश से सदैव होती है। भारत के संदर्भ में एक पुरानी कहावत है, देयर इज एन एज ओल्ड एडिज दैट यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया, बट यू कैन नेवर टेक इंडिया आउट ऑफ एनी इंडियन। और भारत का कोई भी सपूत, कोई भी पुत्र पुत्री विश्व के किसी भी कोने में रहे हों, वो भारत का सपूत, पुत्र पुत्री कभी भी भारतीयता से जुदा नहीं हो सकता। और इसी सोच और विचार को भांपकर भारत के इतिहास में पहली बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की थी। और उस समय से जब प्रवासी भारतीयों का एक अहम भूमिका रही, 1998 में जब भारत ने पहली बार पोखरण में परमाणु ब्लास्ट किए थे, और उस समय में जो अनेक देशों ने भारत के विरुद्ध सैंक्शन किए थे, अगर विश्व स्तर पर वो रुख बदलने का कार्य किसी ने किया था भारत के प्रति, तो हमारे प्रवासी भारतीयों ने जग जग में, देश देश में किया था। और आज 21 साल बाद मेरे भाई और बहनों, जब 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाने जा रहे हैं, यह केवल एक तारीख तक सीमित नहीं है। इट इज नॉट लिमिटेड टू एन इवेंट, इट इज नॉट लिमिटेड टू अ डेट। लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, इसी संबंध को एक वैश्विक और एक नई सोच और विचारधारा और एक नई रिश्ता और एक नई रूप देने के लिए संकलित रूप से उन्होंने कार्य किया है। और एक सेतु का स्थान हमारे प्रवासी भारतीयों को सशक्त करने के लिए उनकी अहमियत और उनकी कोशिश और उनकी पूर्ण कोशिश रही। और इसके आधार पर जब हम आज देखें
कि भारत का छाप हमारे प्रवासी भारतीयों ने कहां नहीं छोड़ा है। चाहे हम कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन देखें, चाहे हम देश के नेतृत्व करने वाले लोगों को देखें, चाहे हम विशेषज्ञों को देखें, चाहे हम एक एक सेक्टर में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को देखें, चाहे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हों, चाहे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हों, चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हों, चाहे आयरलैंड के राष्ट्रपति लियो वार्डकार जी हों, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि भारत और भारतीयों को उभारने का काम प्रवासी भारतीयों ने किया है, और अकेले नहीं, अपने साथ पूरे विश्व को उठाने का कार्य भी हमारे प्रवासी भारतीयों ने किया। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की जनसंख्या केवल 135 करोड़ तक सीमित नहीं है। भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, जिसमें 3 करोड़ हमारे प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या है। आपकी भागीदारी भारत को विकसित बनाने के लिए अनिवार्य है। आपकी भागीदारी और आपकी साझेदारी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनिवार्य है। और इसी दृश्य के पीछे एक शिल्पकार अगर रहा है इस देश में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपनी सोच और विचारधारा के साथ और विदेश नीति जयशंकर जी के साथ, सारे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों के साथ बनाकर हमारे प्रवासी भारतीयों को एक नया सम्मान का स्थान बनाने का संकल्प लिया है। और इसी के फलस्वरूप चाहे यूके में हम देखें, पिछले बार जब बैठक हुई थी, हर साल यह तय किया गया कि 3000 भारत के हमारे विद्यार्थियों को वर्क वीजा यूके में दिया जाएगा। जब पहले बार कोविड आया, वैश्विक महामारी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाड़ी देशों के सभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों को फोन करके हमारे सारे प्रवासी भारतीयों को उस क्षेत्र में उनका हालत और उनकी स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करवाई। और अभी जब यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई हुई, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा के आधार पर 23,000 प्रवासी हमारे स्टूडेंट्स को वापस घर लाने की पहल लगाकर उनको संगठित और सुरक्षित रूप से घर लाने का कार्य किया। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे प्रवासी भारतीयों का सुरक्षा, उनकी सहूलियत और उनकी समृद्धि, ये 3 पॉइंटेड कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। भले हमारे प्रवासी भाई और बहन देश में न रह रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार के दिल में सदैव रहते हैं, यह विश्वास आपको हम दिलाना चाहते हैं। सदैव हमारे प्रवासी भारतीयों ने भारत का सहयोग किया है, भारत के विकास में सहयोग दिया है। 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे विश्व में आई थी, उस समय जो रेमिटेंस देश में एक एक प्रवासी भारतीय ने भेजा था, आज हमारे जीडीपी का भाग का 3.5% हो चुका है। और मैं विटनेस हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को भेजा था यूक्रेन और रूस से हमारे विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए, हमारे एक एक प्रवासी भारतीय ने, मुझे रोमानिया भेजा गया था, वहां बैठकर न दिन देखा न रात देखा, सेवा भाव के आधार पर कोई गाड़ी चला रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, कोई खाने पका रहा है, हमारे एक एक विद्यार्थी को लाने के लिए दिन रात हमारे प्रवासी भारतीयों ने कार्य किया। तो आज आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपको मैं सलाम करता हूं। आज के दिवस पर प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, और विश्व में यह ऐलान हो चुका है कि भारत के बिना विश्व आगे नहीं बढ़ सकता। और विश्व की एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, जहां एक तरफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, जिस कार्यक्रम में बोरिस जॉनसन जी तत्कालीन राष्ट्रपति यूके के, उन्होंने कहा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एंड वन मोदी।
जिस प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत आज विश्व पटल पर उजागर हो रहा है मेरे भाई और बहनों। और वो G20 की अध्यक्षता किस सोच और विचारधारा के साथ? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वासुदेव कुटुंबक की सोच, पूरा विश्व एक परिवार है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में, जो 2013-14 में भारत आर्थिक स्थिति में विश्व में 13 नंबर की शक्ति थी, आज भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बन चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और 2030 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जर्मनी और जापान से भी आगे निकलकर मेरे भाई और बहनों। तो आज के इस दिवस पर आप सब लोगों से निवेदन है कि भारत की इंडियन ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बने, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मजबूत करें, अपने जन्मभूमि से जुड़े रहें और हमारे युवाओं को जो बाहर, देश के बाहर कार्य कर रहे हैं, मेरा एक ही मंत्र है, एक ही संदेश है, LER, लर्न, अर्न, लर्न, अर्न एंड डू रिटर्न। Learn, earn and do return, because your destiny is here with Mother India. मुझे विश्वास है कि आपकी भागीदारी के साथ भारत की यह सदी होगी। इसी भावना के साथ भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। अपने ऐतिहासिक कार्यकाल में मध्य प्रदेश का चेहरा बदल देने वाले, न्यू इंडिया की विकास गति के साथ साथ मध्य प्रदेश का हर कदम बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा निवेदन है कि कृपया सभा को संबोधित करें। नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश विल एड्रेस द गैदरिंग। भारत माता की, भारत माता की। भारत की महामहिम राष्ट्रपति, हमारे देश की गौरव माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुयाना के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के महामहिम राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मध्य प्रदेश के कर्मठ गवर्नर आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, हमारे प्रिय विदेश मंत्री, कल जिनका जन्मदिन भी हमने मनाया, तुम जियो हजारों साल, आदरणीय जयशंकर जी, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी, और मेरे प्रिय प्रवासी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, एक बार फिर मध्य प्रदेश का प्रणाम, इंदौर का प्रणाम और मामा का प्रणाम। यह दुर्लभ अवसर है, आज एक मंच पे 3 महामहिम राष्ट्रपति विराजमान है। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए भारत के राष्ट्रपति जी का, गुयाना के राष्ट्रपति जी का, सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का। मेरा मन आज भाव विभोर है, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गंभीर उदासी भी छा रही है।
3 दिन तक आपका साथ रहा। इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत सत्कार। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। 3 दिन आनंद के, उत्सव के, उमंग के 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। और अब मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे। अरे यहीं रह जाओ ना। जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कल मैं गया था पधारो मारे घर कार्यक्रम में, होम स्टे। वहां संस्मरण सुना रहे थे। एक बहन ने सुना कि पहले तो मैं डर रही थी, दूसरे घर कैसे जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन उस घर में रह के उस घर की हो गई। भाव विभोर थे प्रवासी हमारे सारे, और उनसे ज्यादा भाव विभोर थे मेहमान से ज्यादा मेजबान। ऐसे लगा कि 2 परिवार नहीं मिले हो, 2 देशों को जोड़ दिया हो। सचमुच में 3 दिन से सब तरफ इंदौर की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है, भारत की चर्चा हो रही है। और मैं सच कहता हूं, यह कार्यक्रम केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं था। जयशंकर जी की टीम लगी थी, विदेश मंत्रालय, मध्य प्रदेश की टीम लगी थी, लेकिन इंदौर की जनता ने जी जान से जुड़ के यह कार्यक्रम किया। इंदौर की जनता ने, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे इंदौर स्वच्छता की राजधानी, इंदौर स्वाद की राजधानी, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, इंदौर जन भागीदारी और जन सहभागिता की भी राजधानी है। और जाने के पहले हमने आपसे पेड़ लगवाए ग्लोबल गार्डन में। हर देश के प्रतिनिधियों ने पेड़ लगाया। आपको हमने प्रेम के बंधन से तो बांध ही था, पेड़ के बंधन से भी बांध लिया। ये पेड़ सदैव आपकी याद दिलाएंगे। और जिनने पेड़ लगाए उनको QR कोड भी हम दे रहे हैं। आप स्कैन करेंगे तो आपका लगाए हुआ पेड़ आपको दिखेगा। उस पेड़ को हम बढ़ाते रहेंगे, वो पेड़ आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। आज और सचमुच प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वसुदैव कुटुंबकम का, भारत का मंत्र है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण के साथ, विश्व का कल्याण तब होगा जब पर्यावरण बचे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत दिया है दुनिया को, इसलिए हमने भी पर्यावरण के लिए एक पेड़ लगवाया है आपके से। ये पेड़ हमें यह भी याद दिलाता रहेगा कि भारत का संदेश है, प्रधानमंत्री का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यह भारत का संदेश पूरे विश्व में फैलाइए। आज भारतीय समुदाय का कल्याण का काम करने वालों को महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगी। उन सबको मैं बधाई देता हूं। आज सवेरे एक सत्र और हुआ था महिला उद्यमियों का राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका पर। आज मैं एक योजना जरूर आपको मध्य प्रदेश की बताना चाहूंगा, और वो योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। हम बेटियों, हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं
तो बेटियों की पूजन से। और मध्य प्रदेश में थोड़ा सेक्स रेशियो गड़बड़ा रहा था, बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। तो हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और उसमें तय कर दिया कि बेटी अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र उसके नाम से खरीद के हम रख लेंगे। और जब बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 6,000 रुपया और जैसे 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया और उसको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, साइकिल निःशुल्क। और अब तो लाडली लक्ष्मी 2 में हमने जोड़ दिया है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर एडमिशन हो जाएगा तो इस प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उन बेटियों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा ही भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण के एक नए युग का प्रारंभ मध्य प्रदेश की धरती पर किया। और मैं एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइस एज पे 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, 4.6% है। और आज फूड बास्केट है मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का। गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया। एक नहीं अनेकों उपलब्धियां हैं, विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अद्भुत राज्य मध्य प्रदेश। खेती के मामले में हमारा बासमती राइस, हमारा सरबती गेहूं, चिन्नौर चावल, ड्यूरम व्हीट, मध्य प्रदेश की अलग पहचान है। गुड गवर्नेंस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जाते जाते मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं, मध्य प्रदेश को भूलना मत। भूलेंगे तो नहीं ना? एक तो निवेश में जो योगदान हो सकता है, कई लोग मुझसे मिले हैं, मैं तो कुछ लोगों को कह रहा हूं रुक जाओ, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है कल और परसों। कई लोगों ने बहुत अच्छे प्रस्ताव दिए, आप खुद भी निवेश कीजिए, और अगर आपको नहीं करना हो तो और कोई से भी करवाइए ना। अच्छा, हम में और आप में कोई दूरी नहीं है। हमने एक फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल बनाया है, फ्रेंड्स ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के दोस्त बनिए ना, www.friendsofmp.gov.in पोर्टल है। आप पोर्टल पर प्रस्ताव भेजिए, तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा, देर नहीं लगेगी। मेरे प्रिय मित्रों, अगर निवेश नहीं करना हो तो जहां के हो आप, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेश से भी, तो मेरी अपील है साल में एक बार जरूर अपने गांव या शहर आना। मध्य प्रदेश में हम गौरव दिवस मनाते हैं, तब जितने मध्य प्रदेश में उस गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, उनको बुलाते हैं और कोई ना कोई छोटा मोटा योगदान जरूर देना अपनी माटी के लिए, अपनी जड़ों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। और एक अपील और है, हमारे जो बेटा बेटी पढ़ रहे हैं, अब भारत में बहुत लोग पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने अलग अलग देशों में। आपके देश में उन बच्चों के लिए एक हेल्प डेस्क बना लेना, एक हेल्प डेस्क बन जाए, जो अगर कोई कठिनाई बच्चों को आए तो उनको सहयोग करे। और निवेश ना करो तो ना सही, मध्य प्रदेश घूमने जरूर आना और घूमने जरूर भेजना लोगों को। अभी भी घूम के ही जाना, एकदम मत चले जाना। महाकाल, महालोक, मांडवगढ़, महेश्वर, टाइगर रिजर्व और चीता देखने भी फरवरी में बुलाऊंगा आपको। फरवरी से हमें अलाउ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने नामीबिया से चीता बुलाए, दक्षिण अफ्रीका की चीता और आने वाले हैं। एशिया महाद्वीप में खत्म हो गए थे, अब मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में आ गए। मेरे बहनों और भाइयों, ये सचमुच में ऐतिहासिक अवसर है। समिट के अलावा भी मध्य प्रदेश आते रहें। और अब
कहते हुए मन भारी है, लेकिन विदाई की बेला आ गई है। इंदौर की यादों को लेके विदा, मध्य प्रदेश की पावन स्मृतियों को लेके विदा, हृदय में हमारे प्रेम को लेके विदा। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। तुम बिन लागेगा कन्वेंशन सेंटर सूना, तुम बिन लागेगा राजवाड़ा सूना सूना, तुम बिन लागेगी 56 दुकान सूनी सूनी, और तुम बिन लागेगा सराफा सूना सूना, तुम बिन लागेगा इंदौर सूना सूना, और तुम बिन लागेगा हृदय घट सूना सूना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और अंत में अगर कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि हाल छोटा पड़ गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। एक धागा है जो हम सबको बांधे रखता है, वो है हिंदुस्तानियत का धागा। एक रंग है जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, वो है हिंदुस्तानियत का गहरा रंग। और यही है हमारा सच्चा रंग, यही है हमारा पक्का रंग। भारत माता की ऊर्जा, क्षमता और संस्कृति की सार्थकता से पूरी दुनिया को रूबरू करा रहे हैं हमारे प्रवासी भारतीय। और जहाँ पर वो हैं, वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति को भी अपनापन दे रहे हैं। विदेशों में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रवासी भारतीयों को अब माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। May I request the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to kindly present the Pravasi Bharatiya Samman Awards 2023. Professor Jagdish Chennupati from Australia in the field of science, technology and education. जोरदार तालियों से हमारे प्रवासी भारतीयों का सम्मान करें। Professor Sanjeev Mehta from Bhutan in the field of education. Professor Dilip Launto from Brazil, Art, Culture, Education. तालियां आपकी शुभकामनाओं की तरह हैं, इन्हें देते रहिए। Dr. Alexander Mariakel John from Brunei in the field of medicine. Dr. Vaikuntham Iyer Lakshmanan from Canada in the field of community welfare. Mr. Joginder Singh
Nature from Croatia, art, culture, education. Professor Ramji Prasad from Denmark in the field of information technology. Dr. Kannan Ambalam from Ethiopia in the field of community welfare. Dr. Amal Kumar Mukhopadhyay, Germany, community welfare, medicine. Now, ladies and gentlemen, His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, Guyana, politics, community welfare. Ms. Reena Vinod Pushkarna from Israel, business, community welfare. Dr. Maqsuda Sarfi Shiodani from Japan in the field of education. Dr. Raja Gopal from Mexico in the field of education. Mr. Amit Kailash Chandra Lat from Poland, business, community welfare. Mr. Parmanand Sukumal Daswani from Republic of Congo, community welfare. Mr. Piyush Gupta from Singapore in the field of business. Mr. Mohanlal Hira from South Africa, community welfare. Mr. Sanjay Kumar Shivabhai Patel from South Sudan in the field of business, community welfare.
Mr. Sivakumar Nadesan from Sri Lanka, Community Welfare. Dr. Devun Chandrebose Sarman, Suriname, Community Welfare. Dr. Archana Sharma from Switzerland in the field of science and technology. Justice Frank Arthur Sri Prasad, Trinidad and Tobago, Community Welfare, Education. Mr. Siddharth Balachandran from UAE, Business Community Welfare. Mr. Chandrakant Babubhai Patel from UK in the field of media. Dr. Darshan Singh Dhaliwal from USA, Business Community Welfare. Mr. Ashok Kumar Tiwari from Uzbekistan in the field of business. Thank you so much, Honorable President, and heartiest congratulations to all the award winners. बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया. And now may I call upon the awardee, one of the awardees, Dr. Archana Sharma, to render the acceptance speech. Please. Namaskar. The Honorable President Murmu, Honorable Minister Jaishankar, Ministers of State, fellow awardees, distinguished guests. सबसे पहले तो तहे दिल स्वागत के लिए इंदौर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद. I bring to you very warm regards, not only from my Karm Bhumi, Switzerland, but also from the world as a scientist. Madam President, we are profoundly humbled and deeply honored to receive this award bestowed upon us from the Government of India. Coming from all corners of the world, this gathering represents a vivid range of countries and backgrounds. With the recognition given today to those of us who have made contributions in several diverse fields, ranging from civil society, government, to sciences, we sincerely thank the people of India and the Indian government for this generous gesture. This award is a testament to our commitment and dedication towards making positive contributions. It also serves as an inspiration to us as we continue striving to make a lasting impact on society. In each of the societies in which we live, we have worked together to promote peace and development for all citizens, regardless of ethnicity or background. This has emerged from our strong Indian roots and our commitment to the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family.
Together, we have recognized our mutual need for respect, understanding, cooperation in order to build a better world for everyone. Our efforts have fostered strong national bonds that recognize diverse identities while maintaining the unity of our people in pursuit of a common goal, a better future for all. We are united by a commitment to justice and fairness, striving towards progress through collective action and support for one another. We have emerged as a nation that the world looks up to for solutions and dialogue. We are now leading the world with our presidency of the G20. We are contributing to an effective dialogue for and with the global South. This moment is history, and it is a paradigm-shifting moment. It is a moment of great pride, great honor, because as we speak for India, we not only speak for ourselves, we are the voice of the entire post-colonial developing world. And with the much pride and honor, this is also a moment of great responsibility. The deliberation that the future belongs to India, a debate that emerged at the turn of the century, has become a fact, that the future is India. In the words of Louis Pasteur, the future will belong to those who have done the most for the sake of suffering humanity. The compassion of India, rooted in our ancient and diverse culture, has brought this leadership to India, not only because India has served, but also because India has been resilient and has endured. I remember Prime Minister exhorting that science and technology can remove national barriers, unify the world, and advance peace. This is a message of optimism for science and a message of hope for the world. Children born into the world today are brought up in a time of promise and optimism. They have been gifted with something invaluable, and that's science, an immeasurable resource that we can use to propel not only our great nation, but the entire developing world forward and become global leaders. Science presents us with a vast, boundless realm of possibilities where ideas can be cultivated and progress made. It is only by embracing this new frontier that we will be able to break free from archaic ways of thinking and move towards a brighter future for India and for the world. Our unique sense of modernity, which is unlike that of any other nation in the world, draws its strength from both our ancient culture and the vigor and dynamism of science. We take pride in our ability to embrace the core truth of reality and are not afraid to explore it with an open mind. Our culture has instilled in us such precious values that have enabled us to create a balance between tradition and modernity. This combination has allowed us to be at par with other nations of the world while still retaining our own identity. We continue to strive towards progress while staying rooted in our culture. My mentor and Nobel laureate George Sharpak used to say, "Si on veut faire quelque chose, il faut donc s'occuper de l'éducation." If we want to do something, we must deal with education. I am so glad to note that education in India is being remodeled with the new Science, Technology and Innovation Policy, the National Education Policy, and support to engage with science, technology, industry, and education is an immense effort that our Honorable Prime Minister has dedicatedly put forward, and this definitely would lead to sustained development. As I close this, on behalf of all the Prasar Bharati Samman awardees of 2023, I am reminded of the Rig Vedic verse, Yatra Vishwam Bhavyati Ek Niram. Where the world meets is one nest. This is our nest, and the world is meeting us here.
Namaste, Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. And may I now call upon all the award recipients to kindly come up onto the stage for the photo op with the Honorable President and our esteemed guests on the dais. कृपया ग्रुप फोटो के लिए मंच पर पधारें. सबसे पहले 2023 के जो अवॉर्डीज़ हैं उनका फोटो ऑप होगा और उसके बाद 2021 के अवॉर्डीज़ मंच पर पधारेंगे. और इसके बाद 21 के अवॉर्डीज़ तैयार रहें. These are the memorable moments जो कभी भूलने नहीं वाले हैं और हृदय में कैद होने के साथ साथ अब कैमरे में भी कैद हो रहे हैं. अवॉर्डीज़ फॉर 2023. जोरदार तालियां सभी अवॉर्डीज़ के लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए. और अब 21 के अवॉर्डीज़ मंच पर पधारेंगे फोटो ऑप के लिए. ये 2021 के अवार्ड विनर्स हैं. आप लोग यथास्थान जहाँ पर आप अपनी अपनी जगह है वहाँ पर खड़े हो जाइए और माननीय राष्ट्रपति महोदया और सभी एस्टीम्ड डिग्नेटरीज हमारे बीच मौजूद हैं. ये स्मृतियाँ हमेशा के लिए संजो के अब जहाँ भी रहते हैं उस देश उस शहर लेकर ये जाएंगे. Thank you so much. Thank you. सुनहरी यादें जो कैमरे में कैद हैं उन्हें ये अपने घर में सजाएंगे. And today we are deeply overwhelmed by the gracious presence of the Honorable President of India, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी. हम माननीय आज अभिभूत हैं. आज आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति हम सबका उत्साह वर्धन कर रही है. माननीय हमारी करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको प्रेरणा दें. बस जोरदार तालियां माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए. His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santaki, President of the Republic of Suriname, Shri Mangubhai Patel, Governor of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. S. Jaishankar, Union Minister of External Affairs, Shri Jyotiraj Scindia, Union Minister of Civil Aviation, Shri V. Muralidharan, Union Minister of State for External Affairs, distinguished guests,
and delegates, ladies and gentlemen, namaskar. I am delighted to be present at the 70th Pravasi Bharatiya Divas convention and deliver the valedictory address. I am very pleased to meet you all personally, especially because this convention is being held physically after a long interval of 4 years. I take this opportunity to wish you all a happy and productive new year. I am pleased to welcome His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, as the chief guest in this year's convention. He has his roots in Bihar, and his presence has made this event even more special. I also welcome His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname, who was our chief guest at the 16th Pravasi Bharatiya Divas, which had to be held virtually due to the pandemic. I am also happy to note that one of the youngest Indian diaspora leaders, Ms. Jatena Mas Karen Haas, Member of Parliament Australia, has also participated in the convention as guest of honor for the Youth Pravasi Bharatiya Divas. Ladies and gentlemen, the Indian diaspora today has become an important and unique force in the global system. It has grown into an energetic and confident community in every region and is making sheltered contributions to world affairs in leadership positions. Our diaspora has exhibited extraordinary dedication and hard work and has overcome many challenges to achieve excellence in all walks of life, including art, literature, politics, sports, business, academics, philanthropy, science and technology. Your achievements give us immense pride and joy. The Pravasi Bharatiya Samman Awards symbolize the nation's highest recognition of the diaspora members for their contributions to India and in their home countries. These awards are significant as they not only show our appreciation and acknowledgement of the achievements of the Pravasis, but also reflect our faith in their resolve to keep India's flag flying high in the world. Our previous awardees have continued to achieve greater heights and win praise for their good work even after receiving the Pravasi Bharatiya Samman. I congratulate this year's winners and hope that these awards will encourage you to scale even greater heights in the future. Over the last 2 decades, the Pravasi Bharatiya Divas Convention has served as a unique platform to enable fruitful engagement between government, people of India, and the diaspora. We started this tradition of celebrating our bonds with the diaspora on 9th January to mark the day when Mahatma Gandhi, a pioneer among Pravasis, embarked upon the revival of Indians' freedom movement against colonial rule on returning to India. Ladies and gentlemen, as you all know, the nation is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. On completion of 75 years of independence, these celebrations are dedicated to those who have played a key role in India's progress up to the present times, and also to those who are instrumental in realizing our vision of Atmanirbhar Bharat. Therefore, there could not have been a better time to commemorate contributions made by the Indian diaspora. The theme of this year's convention, Diaspora, Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal,
also reflects our desire to make you a partner in the achievements of our national developmental goals. In recent years, the government has undertaken several initiatives for the benefit of our diaspora. These are not only aimed towards welfare of those residential abroad, but also towards enabling you all to engage in the task of nation building. The overseas citizen of India and person of Indian origin card scheme have been merged, and the visas for the OCI cardholders have been made lifelong. We are also taking steps to enhance safe, orderly, and ethical legal migration of Indian youth for overseas employment. Now, digital platforms are being used to address grievances and to help distressed Indian nationals, especially women and migrant workers. We have also undertaken massive evacuation exercise to repatriate India's and Pravasis from crisis situations, including most recently in Operation Ganga in Ukraine. Your ideas and suggestions presented during the thematic discussions over the last 3 days will be immensely valuable in charting the path ahead. The plenary session discussing women diaspora entrepreneurs is particularly notable, as it shows the potential of our sister entrepreneurs and business women in the diaspora in shaping the entrepreneurial spirit of our women in all sectors of the economy here in India. In addition, our young diaspora achievers can play a significant role in fostering the spirit of innovation and development of new technologies among the youth of India. Ladies and gentlemen, we are facing challenging times today, with economic and geopolitical upheaval all around us. Amid all these challenges, India is engaging with the world with greater self-confidence and a wider goal of securing national interest. This can be seen in our strong relations with all major countries and our leadership on various global platforms. As you know, India is presiding over the G20 this year with the theme, One Earth, One Family, One Future. This theme, inspired by our ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, reflects India's commitment to just and equitable growth for all in the world. In the next 25 years, India is going to embark on an ambitious journey of collective hard work, sacrifice, and intensive development to transform into a self-reliant world leader by 2047, when we will be celebrating the centenary of our independence. Your collective power and potential will be a force multiplier in the nation's inclusive development. I invite each and every member of our diaspora family to become a full partner in this journey. You can contribute with your energy, your experience, your ideas, your business acumen, your investments, your technical expertise and knowledge sharing to enhance our capabilities and capacities to fulfill the vision of an Atmanirbhar Bharat. The call of the soil of the motherland is something that transcends the barriers of time and distance. While you have built enriching and productive lives in your adopted homes in different corners of the world,
Our diaspora brothers and sisters will always hold a special place in our hearts, not only as extended family members, but as responsible stakeholders in India's development. I once again convey my best wishes to the distinguished gathering here and wish you all a happy and prosperous years ahead. Thank you. Jai Hind. Thank you, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. I now invite Honorable Minister of State for External Affairs, Shri V. Muralidharan, to kindly propose words of thanks. कृपया आभार प्रकट करें. Namaskaram and good evening to everyone. It's my privilege to propose the vote of thanks at this valedictory session of the 17th Prasar Bharati Divas Convention. I express my sincere gratitude to Honorable Rashtrapati ji for sparing her valuable time and joining us today and delivering a truly inspiring valedictory address and highlighting how India envisions a multifaceted and enduring relationship with its diaspora. My congratulations to the PBSA winners who have received their awards from Rashtrapati ji. It is said that well begun is half done. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji inaugurating the event yesterday and his inspirational address set the positive tone for the PBD. I express my sincere thanks to Honorable Prime Minister for being a motivational force for furthering our connection with the diaspora and sharing his vision for Atmanirbhar Bharat during this Amrit Kal. I express my deep appreciation to the Chief Guest, His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of Guyana, for joining us. His presence has been an inspiration to this convention and all our diaspora participants. I also extend my warm gratitude to the special guest of honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of Suriname. His presence highlights the strong and enduring relations between Suriname and India. I am grateful to the participation of Ms. Zeneta Mascarenas, Member of Parliament Australia, for being the guest of honor for Youth Pravasi Bharatiya Divas. I also thank the Honorable Foreign Minister from Panama and Suriname, ministers from Mauritius, Malaysia, Zimbabwe, Sri Lanka, Suriname and Guyana, and other esteemed guests at this PBD for their gracious presence. I am grateful to our Honorable Minister for External Affairs, Dr. S. Jaishankar ji, for providing guidance and encouragement at every step. His vision and ambition to involve diaspora in nation's development are noteworthy. I thank Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shri Mangubai Patel ji, for his gracious presence here and his leadership for the PBD. I am deeply thankful to the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, for his leadership in successful conduct of his PBD. We have been able to witness the warm and effusive hospitality of the people of Madhya Pradesh under your leadership. I thank Srimati Nirmala Sitharaman ji, Minister of Finance, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Minister of Health, Shri Dharmendra Pradhan ji, Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, and Shri Jyotiraditya Scindia ji, who is present here, the Minister of Civil Aviation, for significant contributions, including in the plenary sessions. I also thank my colleagues, Srimati Meenakshi Lekhi ji and Dr. Rajkumar Ranjan Singh ji, for their excellent contributions in plenary sessions. I express my gratitude to Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, for his valuable contribution at the Youth Pravasi Bharatiya Divas. I place my appreciation for the lively cultural performances by the cultural troops and for the exceptional digital exhibition put together for the first time on the contribution of diaspora in India's freedom struggle. It's an excellent tribute to our overseas freedom heroes. I thank all the diaspora members and our guests who have come here from different parts of the world and for their enthusiastic participation.
I am sure there are many who have contributed for the success of this PVD, but for want of time, I am unable to mention every name, but I thank everyone involved. With this, I conclude and wish you all a very happy new year and a pleasant stay in India. Thank you all. Thank you so much, sir. आप सभी से निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। थैंक यू हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली।